Students, very good afternoon to all of you. Today I have to talk to you about definition of psychology and the scope of psychology. So let us see that the word psychology comes from the Greek word which mean the word psychology comes from the Greek word psyche. Psyche meaning is that breath, spirit and soul. And the Greek word logia comes from the word logos, that means the study of the something, the study of the word, speech, etc. So the word psychology comes from the Greek word psyche. Psyche means the breath, spirit and soul. So soul, the people believe that the soul is the any spiritual value and it is an immaterial part of a human being. Example, your soul is the part of you that make you who you are, and that will live on after your death. So people believe that soul. So here the Greek word which comes from the psyche. The psychology comes from the Greek word psyche, which meaning the breath, spirit and soul. So soul is an spiritual value and it is the immaterial part of an human being, and your soul is a part of you, and it also make you who are you, and that will live on after your death. Same thing in the what is the spirit? It is a supernatural being. It is a supernatural power of an human being. And a breath that is it is a lives. Always the human being starts from the when he inspiration the air and ends in the expiration of air, or inspirations of air. It starts the human being, and in the inspiration or expiration stage the life is end. The human being life is end. So human life begins with an inspiration and ends with an exhalations. ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତା'ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର କ'ଣ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଟୋଟାଲ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହାମ୍ପର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଏୟାର ଲାଷ୍ଟ ସାର୍କୁଲାର ବ୍ରିଥ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ସାର୍କୁଲାର ବ୍ରିଥ୍ ତା'ର ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ରେ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସାଲେସନ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ନେଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ଲାଇଫ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଥ୍। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ସାଇକୋଲୋଜି କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସାଇକ୍। ତାହେଲେ ସାଇକ୍ରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସାଇକ୍ରୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରିଥ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ଆମେ ସୋଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସୋଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ କିଏ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆର୍ ସୋଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଲିଭ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ମରିଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଇନର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଓକେ, ସୋ soul is the part of the you, and that also makes who are you and also live on after your death. And soul is also a spiritual value and it is a living creature. It is remains or exist in the living creature. Living creature এটা রয়েছে, এটা immortal part অটে। And spirit is a supernatural power of an human being, and it will be also based on the any beliefs, values, okay, and based on the religious etc. ତ religious spiritual କିଛି value, religious spiritual value ଆମ ଭିତରେ କିଛି ରହିଛି। ଗୋଟେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପାୱାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ କହିଥାଉ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କହିଥାଉ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଥ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନହାଲେସନ୍ରେ when you take the oxygen during the inhalations it makes a human being and it will be continue with the function of the human being। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜୀବନ ଲାଇଫ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି
ह्यूमन लाइफ आरंभ होता है लाइफटा ह्यूमन बीइंग लाइफटा आरंभ होता है जो ऑक्सीजन नहीं था ताकि इंस्पिरेशन कही था एक्सहालेशन मध्य कौन हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी था तो लास्ट जो व्हेन द इंडिविजुअल्स becomes death at that time during the death time तो सी गिव्स ए लास्ट एक्सहालेशन एयर जिते से जो कौन से व्यक्ति मरी थाए से मरला समय कौन गोटे लास्टली गोटे एयर से छाड़ी थाए ओके छाड़ एक्सहालेशन करता सो व्यक्ति इन्स्पिरेशन जो एयर नेला तार जीवन आरंभ है जो छाड़ा तार जीवन एंड तार लाइफटा एंड हो गला तो व्हेन यू डाई वी लिव दिस वर्ल्ड विथ वन लास्ट क्लाविकुलर ब्रीथ गोटे क्लाविकुलर ब्रीथ मध्यम आम ए वर्ल्ड रू शेष निश्वास नहीं था तो साइकोलोजीटा से आसी जोटा कि साइके अर्थ है ब्रीथ स्पिरिट सोल एंड ग्रीक वर्ड लोगिया तो लोगिया इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द लोगस लोगस मीन्स ए वर्ड स्पीच और समथिंग गोटे लोगस अर्थ हो वर्ड स्पीच ओके so from this Greek definition of the Greek word we conclude that psychology is the study of soul ताले soul पर study करिया को psychology कहते various author given various type of definition so psychology is the study of mind we know that our mind is a combination of a thought perception memory emotions will or imaginations so when you saw any type of situations when we planned about anything we think about that first we think about the situations how to success the work how to complete the task different type of planning also made up in the mind so always we thought always we also perceived some good perceptions and the bad perceptions some voices we heard that is very good for all of us so also in the mind also function that he perceived anything and due to presence of memory we recall the past experience and due to the presence of emotions we feel sad and we also do cry and we also will remain happy and due to the having the will we also we have the power to create new situations and to complete the task and if we have the imaginations by which we float in the imaginary thinking and also we do the imaginations during the daytime as well as the night time so mind involves the thought process of region and includes the brain's conscious stage and as well as the unconscious stage ओके ताले आम जान जे साइकोलोजी माइंड उपर स्टडी करिया साइकोलोजी कही था तो माइंड हूँ गोटे कॉम्बिनेशन प्रोसेस ये हूँ इनक्लूड द मेमोरी थॉट परसेप्शंस इमोशंस एसेट्रा and it will be the mind will always be functionary as if the patient becomes conscious as well as the unconscious से conscious था कि unconscious था कि तार mind सब continuously functionary हो रही था and it is according to the psychologist William James gives the definition of the psychology that it is the descriptions and explanation of a state of consciousness सो कॉन्शियस जिते व्यक्ति गोटे कॉन्शियस स्टेज रे रोचे तार से कॉन्शियस किपरि रोचे तार को टाइप से कौन सी काम को से शीघ्र करि पारुची कौन सी काम को कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करूची से कौन जिन केमती जानूची एवं किबल टाइप रे सेटा हैंडल करूची कंडक्ट करूची ताले डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियस दैट डेफिनेशन गिवन बाय द विलियम जेम्स how person becomes the awareness about their surroundings and also how persons becomes the unique awareness persons has the awareness about their unique thought memories feeling sensation etc when you can describe something about when persons can describe something your experience and that is experienced by the words that is the part of your consciousness जिते कौन सी जिनस आम डिस्क्राइब करुचे किसी वर्ड देकी ताले सेटा हूँ आम कॉन्शियसनेस कारण आम जानूचे जे जिनस यही काम करने द्वारा यह कंप्लीट हो काम द्वारा प्रोब्लेम क्रिएट हो आम जो काम जो भल भाव डिस्क्राइब करुचे से काम उपर किसी वर्ड देकी ताहा हूँ आम कॉन्शियसनेस सो ये डेफिनेशन देते कि विलियम्स जेम्स
Also, William Wundt given the reference like the psychology study of consciousness. William James gives the definition that is the description and explanation of a state of consciousness only. ତାକୁ ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ କହିଲେ କନସିୟସର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ୍ ଉଣ୍ଡରୁଟ୍ given the definition only psychology study of consciousness. When the individuals awareness about the environment and awareness about the thought, awareness about the memory, feeling, etc., and that is known as psychology. So William Wundt is known as the father of the psychology. William Wundt को father of psychology कहा जाता है. Okay. And William M.C. Dougal gives definition that psychology is the positive science that conduct our living creature. So psychology is the positive science. Why psychology is positive science? Because it gives discover and gives explanations regarding the laws, rules and regulation of the behavior. So that psychology is known as positive science. Because through by the behavior we reach our goal and success the task and complete the task, through by which living creature will be remains in the functionary stage and also be live in the environment. So William M.C. Dougal given that psychology positive science because it is based on the rule and regulations of the behavior, because it gives the discover and expansion the rule and regulation of the behavior. From the through by the behavior all the living creatures going on and they are reaches towards the goal. Then William M.C. Dougal also given another definition that psychology is a science which has aim and which have the objectives by which we understand our behavior. Okay, so when you understand the behavior, then we reach our goals and success and complete the task. Behavior what is the behavior? Behavior is a way in which someone conduct oneself or behave. Behavior जो गोटे जिनस behavior जो गोटे टाइप एलिमेंट जोटे कि आम निजक निज कौन कंडक्ट करि थाउ. ओके, and behavior includes in the behavior organisms activities in order to response to external and internal stimuli. तो internal stimuli हो external stimuli प्रति जो response रहुची गोटे living creature ताकू तार behavior कहा जाता है. And it is also an action. Behavior also is an action by which organism adjust to the situation and live with the situation. Behavior मध्य हम क्या कहता हूँ ना, behavior द्वारा कौन होची ना इंटरनल स्टिमुली हो बा एक्सटर्नल स्टिमुली हो. गोटे एक्सटर्नल स्टिमुली माने बाहर कौन सी वस्तु हो बा इंटरनली आमर किसी बा कौन से ऑर्गन अफेक्ट है तो बिहेवियर आम से टाइप हो जाए. आम ता प्रति रेस्पन्स करता जदि किए आमको झगड़ा करे ताले आम से टाइप रिएक्शन देखा था. जदि इंटरनल किसी प्रोब्लेम है बॉडी किसी ऑर्गन डिफेक्ट देखला आम से टाइप टायर्डनेस वीकनेस फिल करे से आम काम प्रति अवहेला करि थाउ. ओके, तो बिहेवियर द्वारा कौन है आम आउ गोल को रिचेस्ट गोल पाखे पहुँच पार ना कारण आम इलनेस स्टेज था. एक्सटर्नल स्टिमुली द्वारा जब किसी एनवायरमेंट आमको एनवायरमेंट जब किसी प्रोब्लेम है जदि आम ताको एडजस्ट करें ना ताहले आमर काम किसी सक्सेस हम ना. यदि आम एनवायरमेंट सहित एडजस्ट कर चलले ताहले वर्क सक्सेस है जानले आम बिहेवियर ठीक भाव में चली. ओके, so behavior through by the behavior the way in which someone conduct oneself or behaves, and when the organism activities is going on in order to response of external or internal stimuli, that is known as a behavior. It is also an action that organisms uses or adjust to the situations or live with the environment. So psychology is the study of the mind and behavior. It is given by the American Psychology Association. The American Psychology Association also said that through by the human experience due to our functioning of the brain, it will be determined the how you act towards the nations, and from the child development it will determine the how much of care given to the aged stage. From the scientific research attend to the mental health center, we understand about the behavior
if you understand the behavior, then psychology definition is successful. So after understanding your behavior, what type of your role, what type of your work, how to reach your the goal, how to complete task, it is better understood by the behavior. It is given by the American Psychological Association. तो American Psychology Association कौन कहते ना साइकोलोजी हूँ जो माइंड बिहेवियर माइंड और बिहेवियर उपर स्टडी करवा ताको हम साइकोलोजी कही था। तो एथरे ह्यूमन एक्सपीरियंस रही ओके ह्यूमन एक्सपीरियंस जदि रही जदि आमर ब्रेन प्रॉपर फंक्शनरी करें ताहले आम नेशन प्रति भल कर्तव्य रही ओके। तो बिहेवियर आम से टाइप्र बिहेवियर द्वारा आम भल वर्क करें नेशन प्रति भल वर्क करता। यदि चाइल्ड डेभलपमेंट पीरियडटा भल रही ताहले जदि तार बिहेवियर बा माइंड बा तार जहाँ भी डेभलपमेंट हवा कथा चाइल्ड प्रॉपर डेभलपमेंट होती ताहले केते परिमाण केयर एजेड स्टेज दरकार ताहा मध्य जना पड़ी थाए। तो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर रू हेल्थ मेंटल हेल्थ सर्विस सेंटर हो आम प्रथम बिहेवियर को अंडरस्टांड जदि आम बिहेवियर ठीक भाव अंडरस्टांड बिहेवियर प्रति आम धारणा भल भाव रमर बिहेवियर ठीक रही ताहले ताहले जेकोसी कम को भल भाव हैंडल कर पार सिचुएसन प्रति एडजस्ट कर। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। Then come to the scope of psychology. So scope of psychology is broadly classified into two groups, that is basic psychology and applied psychology. So in the basic psychology, the aim of basic psychology is contribute to the knowledge of behavior. तो बिहेवियर जो सब नॉलेज रही कंट्रीब्यूट तार रही केमी आम नॉलेज ऑफ बिहेवियर को डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो। तो दैट बेसिक साइकोलॉजी और नॉलेज ऑफ बिहेवियर यूजेस बाय द सम इंस्टीट्यूट लाइक द कॉलेज यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी डिपार्टमेंट। तो बेसिक साइकोलॉजी मैंने कौ यूज करती कॉलेज यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी डिपार्टमेंट मैंने बेसिक साइकोलॉजी यूज करती कहीं से सब बिहेवियर से एम्प्लॉय मानकर बिहेवियर नॉलेज गुड़ाक बिहेवियर गुड़ाक दरकार होता है एवं नॉलेज बिहेवियर दरकार होता है। से नॉलेज रहा दरकार जे कौ कम केमती करा कौ टाइप बिहेवियर केमती क्या सहित करा सेगुड़ा से मैंने जाना उचित से बेसिक साइकोलॉजी आल्सो यूटिलाइजेस इन द कॉलेज यूनिवर्सिटीज लैबोरेटरी डिपार्टमेंट। तो बेसिक साइकोलॉजी आल्सो डिवाइडेड इनटू द डेवलपमेंट साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एब्नॉर्मल साइकोलॉजी देन एक्सप्लेनेटरी साइकोलॉजी साइकोमेट्रिक्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड पर्सनालिटी साइकोलॉजी। First, under the basic psychology, first see that developmental psychology. Developmental psychology is based on the human development. Okay. So human development, it studies the human development, physical, emotional, social, and personal development across the lifespan or individual life. So it studies the human development. It also studied how biological and psychological development occurs in the human being throughout the lifespan, how human development occurs from the infance to the childhood and adolescence to the adulthood. And here the psychological development that involve in the psychological development that involves the emotions, personality and social relations. सो जदि डेभलपमेंट साइकोलॉजी ह्यूमन डेभलपमेंट कथा को नवा ताले व्यक्तिर केमती साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस केमती चली जदि जो स्टडी करें आम डेभलपमेंट साइकोलॉजी कही था। एथरे ह्यूमन डेभलपमेंट रे केमती बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेभलपमेंट चली गोटे व्यक्ति केमती तार इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड पीरियड को आसूँ आडोलसेंस केमती आडल्टहुड को जाऊँगी साइको सोशल डेभलपमेंट रे व्यक्तिर किभली भाव इमोशन रोचे पर्सनालिटी किभली रोचे सोसाइटी लोक सहित किभली रिलेसन रोचे तार इमोशन केमती रोचे व्हाट आर द हाउ their personality will be developed and personal development occurs. So in the personal development is the enduring pattern of the thought, feeling and behavior. तार thought, feeling and behavior केमती रोचे तो एगुड़ाक डेवलपमेंट साइकोलॉजी जना पड़ जाए। So only development psychology focused on child development. Then come to the social psychology. In the social psychology it is a study that how persons keep interpersonal behavior with other peoples in the society,
how his behavior will be governed by the social force, and it will also primarily focus on the attitude, what type of attitude, what type of reactions of what type of feelings of a person towards other, that type of what type of attitude, what is the prejudice, what type of leadership of that individuals in the society, and what type of aggressions behaviors towards other peoples that will be achieved by the individual, what are the intimate relationship and behavior in the group. All are things will be determined by the social psychology. In the conformity, that is the what are the matching of attitude, belief, behavior according to the group norms. ता group norms अनुसार तार attitude, belief, behavior ठीक अच्छी कि नहीं सेटा जना पड़ जाए थाए एवं तार केमिति प्री कनसेप्ट जजमेंट रही प्रीजुडिस रे जना जो प्रीजुडिस कथा कहले जो प्रीजुडिस रे कौन हुए ना तार प्री कनसेप्ट जजमेंट केमती रोचे तार ओपिनियन केमती रोचे से जना पड़ जाए थाए एवं मोटिवेशंस, इमोशंस एगुड़ा सब जानी होता है. देन कम टू द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. हाउ जेनेटिक फैक्टर इफेक्ट ऑन बिहेवियर दैट इज डिटरमाइंड बाय द फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड इट तो देखा जन जन इन इफ यू डिस्कस अबाउट द फैमिली इन सर्टन टाइप्स केसेस वी सी दैट फ्रॉम द पेरेंट टू gene also transport the offspring, so that doctors as well as the sons also show some type of aggressive behavior same like the parents. So here's also we know that the genetic factors also affect on the behavior. So in the physiological psychology we examine that how genetic factors affect on behavior. And the physiological psychology also deals with the brain, nervous system, endocrine system and bodily chemical like the neurotransmitter etc. And how that systems like the nervous system, endocrine system, how to regulate our behavior. In the abnormal psychology it is known as the psychopathology. It is deals with the mental disorder. So in the abnormal psychology it will determine the by the abnormal psychology we know about that mental disorder, okay, or mental illness, and it also studies the causes, identifications, classification, and what type of disorder, psychological disorder of a individual, and what are the treatments should be provided to the individual who are in the psychological disorder like the schizophrenia, mania etc. ताले आबनो साइकोलॉजी रे कौन हुए ना मेंटल डिजॉर्डर व मेंटल इलनेस ऊपर जना पड़ जाए जानी होता है. तो एथरे मेंटल साइकोलॉजी डिजॉर्डर किभली होउची तार सोर्सेस कौन, तार कजेस कौन, तार केते टाइप रो क्लासिफिकेशन रही साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर एवं को टाइप रो पेशेंट अटे से को टाइप रो डिजीज सफर होइची साइकोलॉजिकल को टाइप रो साइकोलॉजी ताकू हेची को टाइप रो ट्रीटमेंट ताकू दिया जिवो. Then come to the experimental psychology. In the experimental psychology we we learn about the laboratory research that is based on the psychological process that include the perception, learning, memory, thinking, motivation and emotions. ताले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी रे ये गोटे लैबोरेटरी रिसर्च माध्यम रे गोटे व्यक्तिर परसेप्शन केमती रोची से को टाइप रो जिंस किभली परसीव करि पारुची, तार लर्निंग मेथड केमती रोची, तार को टाइप रो मेमोरी रो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तार थिंकिंग पैटर्न केमती रोची, तार मोटिवेशन केमती रोची, से को टाइप रो तार वांटिंग कौन रोची बा विलिंगनेस कौन रोची, जो थे कि तार से मेमोरी मोटिवेशनल मेमोरी जाऊँ मेमोरी तार कौ टाइप काम करुच्ची और तार बिहेवियर केमती रोची मोटिवेशन रे. सो द इन द मोटिवेशंस दैट इन्वॉल्व्स द बिहेवियर बाय व्हिच पर्सन से रिचेस द गोल. मोटिवेशन जो बिहेवियर रोचे व्यक्तिर तार से गोल पाखे पहुँच पार्टी. एग्जांपल गोटे गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड वांट टू बिकम्स ए डॉक्टर, तो जो डॉक्टर होगापी तार एम रहा तार वांटिंग रहा तार बिहेवियरटा रहा जे तार बिहेवियर रहा एम रहा जे सी गोटे डॉक्टर हो. तापर से तार काम को आगे नेला, तापर से भल पढ़ला और डॉक्टर मन पाला. सो मोटिवेशंस, सो
how to motivate the peoples through by the behavior person goes to the richest goal. And emotion ବ୍ୟକ୍ତିର କେମିତି ଫିଲିଂ ରହୁଛି, ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, କ୍ରାଇଂ କେମିତି ରହୁଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଆଙ୍ଗର ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହାପି ରହୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତା ମଧ୍ୟରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ସ। In the it is also concept of the when we measure our if you during the when we want to measure the behavior of a person's or capacity of a person's that psychological test is under the psychometrics. Through by the psychometrics we know about that behavior of a person's, we measure the behavior of persons, what are the capacity of persons to reach to the goal, how to develop a psychological test, that thing. And in the psychometrics also involve the various type of test in the personality. Always personality, we said that personality is also combination of the thought, feelings, behavior, etc. So what type of development occurs in the personality of a persons, what type of intelligence or which amount of which percent of intelligence remains in the patient, तार को टाइप इंटेलिजेंस रोचे केते बन इंटेलिजेंस रोचे। सो ये सब जाने पहले साइकोमेट्रिक द्वारा ही जानी था, कारण साइकोमेट्रिक गोटे टेस्ट जो कि आम बिहेवियर मेजरमेंट करें व्यक्तिर पर्सनालिटी इंटेलिजेंस मेजरमेंट करें। ओके, देन कम टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। It is also focused on the higher mental process. Through the cognitive psychology, we know about that memory, thinking, reasoning, language, what type of language uses by the persons, what type of problem comes, like the during the working in the company there is a no function of the machines. At that time, we our problem solving and decision making process going on mind. So that manager, so what will do, that will inform to the authority, then give the by the applications, then you call to the mechanical peoples, then he will repair the machines, then the machines will be work proper. Then problem solving methods, persons has the problem solving methods, that is no problem solving, decision making, also first take decision then will solve the problem. Okay, then persons has the intelligence power, because through by the intelligence also he solve the many problems. In the intelligence, individual act purposefully and to do the rationally and deal effectively with the environment. तो इंटेलिजेंस रे कौन हुए ना व्यक्ति जो कामटा करे पूरा सक्सेस करे एवं रेशनाली ताहा चिरस्थायी होता है एवं से एनवायरनमेंट सहित भल भाव डील करि थाए, ताले व्यक्तिर इंटेलिजेंस पावर कॉग्निटिव साइकोलॉजी द्वारा जानी होता है। ओके, देन द कम टू द इन द अंडर द बेसिक साइकोलॉजी, दैट इज द पर्सनालिटी साइकोलॉजी. In the personal psychology also describe, explain about the individuals constants of behavior with represent their personality. तार पर्सनालिटी सहित तार बिहेवियर केमती गोटे व्यक्तिर पर्सनालिटी सहित तार बिहेवियर केमती सब रोचे, तार पर्सनालिटी केमती रोचे, तार बिहेवियर रोचे ता मते जानी होता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मध्य पर्सनालिटी साइकोलॉजी व्यवहार, पर्सनालिटी साइकोलॉजी व्यक्तिर पर्सनालिटी बिहेवियर रही से कौन करे इंस्टीट्यूट भल भाव काम करें। ओके, इन द पर्सनालिटी दे हैव अ गुड थिंकिंग, फीलिंग्स एंड द बिहेवियर, थ्रू बाय द गुड बिहेवियर ही रीचेस टुवर्ड्स द गोल्स, थ्रू बाय द इंटरेस्टिंग, थ्रू बाय द पर्सनल असेसमेंट एंड थ्रू द पर्सनालिटी दे आल्सो सक्सेस देयर वर्क. Then come to the scope psychology, that is applied psychology. Applied psychology also used to various field like the school, industry, hospital and community. Here people who are the work, they have the various type of psychological nature. So applied psychology also has in the subfield like the clinical psychology, counseling psychology, organizational psychology, educational psychology, health psychology, environmental psychology, forensic psychology, sports and exercise psychology
and psychology of women. So first that clinical psychology. So in the clinical psychology, it also be uses in the hospital. Here it deals with the what type of disorder of a patient suffering from, and what are the treatments provided to the patient who are in the psychological disorder. तो psychological disorder जो patient रही था तांको किभली भाव में ट्रीटमेंट दिया जाए था, को टाइप रो तांको psychological disorder रही आ विषय क्लिनिकल साइकोलॉजी माध्यम क्लिनिकल साइकोलॉजी द्वारा ही आम पेसेंटर डिजीज क्लिनिकल साइकोलॉजी जेहेतु रोचे हॉस्पिटल मानकर यूज करा जाए थाए से साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर पेसेंट को टाइप डिजीज रोचे ताको को टाइप ट्रीटमेंट दि जाए थाए क्लिनिकल साइकोलॉजी माध्यम संभव होता है जेहेतु दैट साइकोलॉजी अप्लाइड इन द क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटअप. तो एथरे कौन हुए ना आम क्लाएंट को क्लिनिकल साइकोलॉजी जो हॉस्पिटल यूज करा क्लाएंट को इंटरव्यू नि जाए विभिन्न प्रकार साइकोलॉजी टेस्टिंग करा जाए निमांस हो बेंगलोर हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो सबुड़े यही क्लिनिकल साइकोलॉजी यूज करता. क्लिनिकल साइकोलॉजी मध्यम आम पेसेंटर को टाइप साइकोलॉजी डिजॉर्डर रही को टाइप ट्रीटमेंट दबा और पेसेंटर इंटरव्यू मध्यम भेरियस टाइप ऑफ डिजीज जानी था तार हिस्ट्री कलेक्शन करें डायग्नोसिस करें. Then come the counseling psychology. The people who are suffering various type problem in every day, that type of people require the counseling psychology. Counseling psychology माध्यम जो व्यक्ति मेंटली सबुदिन किसी प्रॉब्लम फेस करती सो काउंसलिंग साइकोलॉजी मध्य काउंसलिंग व गाइड करा जाए केमी लाइफ सहित स्ट्रगल करके एडजस्ट कर सब विषय कहुए तेणु सो दैट इन द काउंसलिंग साइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू द फैमिली मेंबर्स and the clients also if conscious stage and knowing stage. Neither it will give counseling the family patient how to give in the care and what are the problems comes in the family that will be solved. सो काउंसलिंग साइकोलॉजी मध्य जो व्यक्ति मानकर दिन नित्यदिन लाइफ रे जहाँ सब प्रोब्लेम रोचे केमती सॉर्ट आउट कर सॉल्व करा से विषय काउंसलिंग साइकोलॉजी माध्यम काउंसलिंग करा जाए थाए. देन कम टू द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. Organizational psychology is also known as the organizational behavior. What type of problems comes in the school, hospital, university and company through by the organizational psychology we established a organizational behavior and also finding the solutions and then we reached our goals. Here we always are in the organizational psychology always try to solve the problem of the employee who are working in the group company or university and the what type of problems are arises in the hospital university that also be solved through by the organizational psychology. तो organizational psychology हम organizational psychology रे को organizational behavior मते कहि थाए काहे कि ना एथरे जे कोनोसी प्रॉब्लम आसिला ताले organizational behavior माध्यम रे आमे गोटे organizational behavior माध्यम रे आमे गोटे गोल रखिबा बा एम रखिबा तापरे प्रॉब्लम को सॉल्व करिकि आमे गोटे टास्क को कंप्लीट करि परिबा. ओके एथरे कौन हुए जेकोसी प्रॉब्लम हॉस्पिटल हो यूनिवर्सिटी मिलिटारी कंपनी आसला ताहाकू भल भाव में सॉल्व करा जाए थाए बा कौन सी ग्रुप रो बा लीडरशिप रो किछि प्रॉब्लम आसला ताको मध्य सॉल्व करबा ट्राई करा जाए थाए. देन कम टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल आल्सो बी in the educational psychology various what type problems comes from the teaching learning process what are the doubts comes that all are be resolved through by the educational psychology. एजुकेशन साइकोलॉजी मध्य आम एजुकेशन लेवल रे मध्य अप्लाई करा जाय थाए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इत्यादि व्यवहार करा जाय थाए. एथरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किभଳି भाବରେ टीचिंग दिया होची किभଳି भाବରେ टीचर केवल टीचिंग दोची कि स्टूडेंट लर्न करूची ता भितर जो डाउट मध्य आसीଥାଏ सेगुड़ा मध्य क्लियर हो जाय थाए एवं एथरे प्रिंसिपल टेक्निक आ मेथड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्य दिया जाए कि को टाइप टीचिंग दिज्व साइकोलॉजी पर केवल टीचिंग दिज्व केमी स्टूडेंट लर्निंग कर तार मेंटल हैबिटा केमी रहा उचित सी कि भाव में कंसंट्रेशन दब कि भाव में तार एटीट्यूड बिहेवियर केमी पढ़ला समय केमी कंसंट्रेशन तार माइंड को पढ़ा पर दब. तो युवा सब दैट मेथड ऑफ साइकोलॉजी एंड प्रिंसिपल टेक्निक आल्सो अप्लाई इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन कम टू द हेल्थ psychology also related to the
health field. It also be describe about the promotion of health and prevention of illness. ताले health psychology माध्यम कौन हुए ना केमिति गोटे साइकोलॉजिकल डिजीज को प्रिवेंशन करवा एवं व्यक्तिर हेल्थ कंडीशन को प्रमोट करवा ता हेल्थ साइकोलॉजी माध्यम आम काउंसलिंग देता है मेडिकेशन ट्रीटमेंट दि जाए एवं एथर स्ट्रेस और इलनेस विषय डिस्क्राइब कराई थाए तो गोटे व्यक्ति स्ट्रेस केमती रोचे तार वर्क ओवरलोड होगापर केमती स्ट्रेस रोचे तार किसी गोटे जन कि लॉस कलापर केमती स्ट्रेस रोचे और से केमी कौ टाइप्र इलनेस कंडीशन आसूची ताले स्ट्रेस इलेसन मध्य जो रिलेशनशिपटा को भल भाव में बुझा जाए हेल्थ साइकोलॉजी माध्यम So it is another the biopsychological so it describe the interaction of biological, psychological and social factor तो सोसाइटी रे केमती को टाइप रो सोशल फैक्टर केमती इफेक्ट पकाउची कल्चर वैल्यू हो किंबा कौन से बिलीफ ऊपर हो तो सोशल फैक्टर ऊपर हो तो कल्चर बिलीफ माध्यम व्यक्ति की मुझे साइकोलॉजी कंडीशन को चली जाऊँगी गोटे रिलीजियस बिलीफ माध्यम केमती व्यक्ति गोटे इलनेस कंडीशन को आस साइकोलॉजिकल इलनेस गोटे मनकर गोटे विलेज रे कौन होची ना कौन सी गुणीगारेडी हो द्वारा हो तो आम कौन सी विलेज रे गुणीगारेडी हो बा कौन गोटे कुसंस्कार प्रथा उपर हो तो से ताकू नहीं कि कौन हुए ना आम कौन से लोक अप्लाई कले तो से लोक कौन हुए साइकोलॉजी कंडीशन को चली जाए तो ये बायोलॉजिकल कंडीशन हो व्यक्तिर फिजिकल कंडीशन जब किसी परिवर्तन आसला कि साइकोलॉजिकल पैटर्न तार मेंटल ऊपर किसी इफेक्ट पकेला सोशल फैक्टर तक इन्फ्लुएंस कला ताले व्यक्ति कौन हो गोटे साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर कंडीशन को चली जाऊँगी मॉडल को आम कहूँ बाय साइकोसोशल मॉडल तो एथरे हेल्थ साइकोलॉजी माध्यम कौन हुए आपको ट्रीटमेंट दि जाए और हेल्थ प्रमोशन करा जाए गोटे व्यक्तिर भल भाव में हेल्थ रिलनेस केमती प्रिवेंट करा तो से विषय हेल्थ साइकोलॉजी माध्यम आम ट्रीटमेंट भल दे था देन कम टू द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी so in the environmental psychology through by the environmental psychology also work in the school industry and government setting through by how we clarify or the clear the environment clear the surrounding of the school college that also helpful by the environmental psychology माध्यम जेहेतु environmental psychology जेहेतु स्कूल इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेटिंग रे काम करुँची environmental psychology मध्य आम सराउंडिंग भल क्लीन नीट एंड क्लीन कर एवं ऑल्सो भी अवॉइड टू द साउंडिंग्स एंड ऑल्सो अवॉइड टू द पॉल्यूटिंग एरिया सो एथरे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी माध्यम कौन है ना आम क्राउडिंग ठारू केमती स्टडी अबाउट द क्राउडिंग नॉइज एयर पोल्यूशन हाउ इट इज अफेक्ट द बिहेवियर ऑल्सो ऑल आर थिंग्स विल बी studied so through by the environmental psychology it will be also be avoided these are also avoided then come the forensic psychology forensic psychology applied to the legal system by which we choose our jury and that jury also be make judgment and solve the problems so some forensic psychologists train police handle the domestic violence in type of negotiate that is try to work out on agreement okay and so एथर कौन होची ना फोरेंसिक साइकोलॉजी मध्य किसी रूल रेगुलेशन पर रोचे गोटे लीगल सिस्टम माध्यम रोचे जोटा कि फोरेंसिक साइकोलॉजी द्वारा आम कौन कर गोटे आम गोटे जूरी गोटे जूरी बा आम जजमेंट जन जजमेंट बाची था जजमेंट जो कोर्ट बा कोर्ट रुहंती जज जो रुहंती जूरी आम कही था तो जूरी रे गोटे मेम्बर रही था ओके जजमेंट करने जड़े था जूडिशियल मेम्बर किसी रही था जोटा कि प्रोब्लेम आसे सॉर्ट आउट करती एवं डोमेस्टिक वायलेंस को रक्षा करती कौन सी प्रोब्लेम सॉर्ट आउट करके बाहर को चेष्टा करते सो फोरेंसिक साइकोलॉजी ऑल्सो ऑलवेज दैट साइकोलॉजी अप्लाई टू द कोर्ट इट इज अप्लाइड ऑल्सो इन द कोर्ट for the law and where we select a jury or the judge by which they also make decisions to solve out the problems of a prison person okay तो जूरी सिस्टम माध्यम कौन हुए ना जोटे जजमेंट पछा होता है तो गोटे जजमेंट द्वारा कौन हुए डिफरेंट टाइप प्रोब्लेम जो आसूसी कोर्टे ताको सॉर्ट आउट कराई सॉल्व कराई था एवं जूरी सिस्टम माध्यम आम जेकोसी कंपिटिशन हो जूरी मेम्बर होती कंपिटिशन से पार्टिसिपेट कर कौन कहते व्यक्ति मानक रिवार्ड दे था भल मार्क देकी ओके
Then come the sport and exercise psychology. Sport and exercise psychology also applied in the various type of athletic field. आम जो जो कौन गेम फिल्ड रे मध्य स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइकोलॉजी अप्लाई कराउछि एथरे कोन होछि ना केमिति हमर मसल डेवलपमेंट होछि सेथरे जणा स्पोर्ट्स एंड साइक्लो एथलेटिक एक्टिविटी द्वारा आमर मसल केमती मसल केमती डेवलपमेंट होछि एवं आम केमती इलनेस रु रक्षा पाउछ इलनेस रु प्रिवेंट करि पारुछे स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइकोलॉजी रे एक्सरसाइज साइकोलॉजी डील करि थाए. ओके देन कम टू द वुमेन साइकोलॉजी. वुमेन्स साइकोलॉजी ऑलवेज डील्स विथ द वुमेन्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट. वुमेन्स बिहेवियर डेवलपमेंट उपर रिलेट होता है. वुमेन्स साइकोलॉजी माध्यम आम हाउ इट इज गिव्स द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन. मेन वुमेन भितर तफात कौन रही एवं हाउ इट एक्सप्लेन्स भेरियस इश्यू लाइक द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. वुमेन उपर किभଳି अत्याचार होची से डिस्क्राइब करिथाए एवं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन बिहेवियर कजेस ऑफ वायलेंस वुमेन एंड सो ऑन. ताले वुमेन साइकोलॉजी रे कोन हुए व्हाट टाइप ऑफ दैट साइकोलॉजी ऑलवेज रिलेट टू द वुमेन्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट. वुमेन्स बिहेवियर डेवलपमेंट पई वुमेन साइकोलॉजी रही. तो वुमेन साइकोलॉजी रे केमिति वुमेन साइकोलॉजी स्टडी कौन करि थाए ना वुमेन्स उपर केमिति भाइलेंस रोचे केमिति तांको प्रति अन्य अत्याचार होची केमिति मेन वुमेन भितर तफात कौन ये सब डिफरेंस गुड़ाक वुमेन साइकोलॉजी दे थाए. ओके सो योर डेफिनेशन स्कोप साइकोलॉजी ओवर.